Okay, so we have done that gravitational potential, which is phi, is equal to minus gm over r. G capital is the universal gravitational constant and m is the mass of the planet. And r is the distance at which phi gravitational potential is required from the center of the planet. Then from this gravitational potential energy is equal to m times phi. So we can write gravitational potential energy m gravitational potential minus gm over r. So gravitational potential energy is minus capital G mass of the planet, mass of the object divided by distance r from the center of the planet. So this is the formula for the potential energy. But gravitational potential energy is simply mgh. So what's the difference? This formula is valid when h is smaller than the radius of the planet. अगर आपके पास हाइट जो मूव की है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट से छोटी है, आप सिंपली कह सकते हैं इफ द हाइट इज वेरी स्मॉल, कितनी? थोड़ी सी, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ये जो g होता है इतना चेंज नहीं होता, ये कंसिडर करते हैं हम बेटा कांस्टेंट. सो when the g is constant, there is no change in the value of g, we will use gravitational potential energy. लेकिन जब height बहुत बड़ी change करते हैं, when the difference of the distance is too large, g inversely proportional to distance square. So due to change, variation in the g, mean g constant nahi hai, then the potential energy formula will be minus gmm over r. If the g is constant, then we can use mgh. If the g is not constant, it is changing significantly, then we will use this gravitational potential energy. Next, kinetic energy is 1 by 2 mv square, which can be written as half m into speed of the object in the orbit, which is gm over r. So it becomes kinetic energy is equal to g capital M small m over 2r. So kinetic energy और potential energy का formula, जब हम दोनों को add करेंगे, it becomes the total energy, which is the sum of kinetic and gravitational potential energy. So kinetic energy is equal to G capital M small m over 2r, and the potential energy is minus G capital small m over r. When both are added, it becomes minus gmm over 2r. This is the total energy. And we have done that the graph between D from the center of the planet and energy
right? So there are three energies. One is the kinetic energy. Next, this is the total energy. And the next is this one is gravitational potential energy. So three energies: kinetic, total, and gravitational potential. Suppose this is the planet Earth. Its radius is capital R, and this is the end of the gravitational field. If the object is moving away from the surface of the Earth, its gravitational potential energy is increasing and its kinetic energy is decreasing. तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे, its potential energy increases, its kinetic energy decreases. Now, according to law of conservation of energy, change in kinetic energy is equal to change in gravitational potential energy. Now the change in kinetic energy is final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to change in gravitational potential energy, which is equal to m times delta phi. Reason, because the gravitational potential energy is m phi, m constant. When potential energy is increasing, phi increasing, so it's m phi. Now, 1 by 2m is constant, so we can write v square minus u square is equal to m phi. So m cancelled. We can write v square minus u square 2 times delta phi, and this is 3-mark derivation. This is equation of motion, right? V square minus u square is equal to 2 times delta phi. तो ये स्पेस में मोशन के लिए बेटा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, एंड इट इज सिमिलर टू v square minus u square 2as. Very similar to this. लेकिन इसमें क्या था? Here the acceleration is constant, and here the acceleration means the value of g is changing. Both are similar, but one from the constant acceleration and other for the changing acceleration. Both are similar. तो ये derivation हमें आनी चाहिए. Kinetic energy is equal to gravitational potential energy, and finally v square minus u square is equal to 2 times delta phi. Okay. Now suppose object is placed at the surface of the planet, और इसको बेटा हमने लिफ्ट करके यहाँ पे ऊपर थ्रो करना है, मीन इंफिनिटी पॉइंट पे पहुंचाना है. तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड सम इनिशियल स्पीड एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू थ्रो इट अप. कि जब ऊपर जा रहा होगा, इट्स gravitational potential energy is increasing, its kinetic energy is decreasing, and finally here no energy is required, because here this is the point which is called infinity, and here gravitational potential 0, so final speed is not required here. जब destination में पहुंच जाएगा हमें नहीं चाहिए. तो जब भी ऑब्जेक्ट को आपने स्पेस में थ्रो करना है, स्पेस में बेटा भेजना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको एस्केप करना है,
at the surface of the planet आपको initial speed चाहिए, लेकिन जब वो उसकी field से निकल जाएगा, no speed is required. Okay. Now, 2 points. One at the infinity, gravitational potential is 0, and the second at the surface of the planet, gravitational potential is minus Gm over r, because for the center of the planet, distance is capital R. Now, according to the formula, this v square minus u square 2 times delta phi. So final speed is 0. Initial speed u square, which is required, 2 times delta phi, mean change in the potential between these 2 points, one at the surface, other at the infinity. So दोनों को आप subtract करेंगे, so it becomes minus Gm over r and minus 0. So it finally minus u square minus 2 Gm over r minus cancelled. So u is equal to under root of 2 Gm over r. So this is the speed at the surface of the planet required by any object to escape from the gravity of the planet, gravity of the earth. So this is called escaping speed. Look, it does not depend on the mass of the object. कोई mass आपके पास है 10 kg का 100 kg का, उस पर depend नहीं करती. It depends on the value of the g. It depends on the mass of the planet. It depends on the radius of the planet. It does not depend on the mass of the object which is escaping the gravity. So suppose we have to escape from the gravity of the earth. हमने space में जाना है, तो हमें कितनी initial speed चाहिए at the surface? तो बंदे के mass पे depend नहीं करती. It depends on the mass of the planet under root of 2 into 6.67 into 10 power minus 11. Mass of the earth is 6 into 10 power 24. Radius of the earth is 6.4 into 10 power 6. So this will be 11.2 kilometers per second. तो याद रखें, this is a fixed value. जब भी अर्थ की सरफेस से इतनी स्पीड से किसी चीज को ऊपर आप थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो एस्केप कर जाएगा और वो कभी वापस अर्थ पे नहीं आएगा. So this is the minimum speed required. Suppose this is the earth and there are 2 orbits around the earth. This is the orbit number 1 and this is the orbit number 2. The radius of the first orbit, suppose this is R2. The radius of the first orbit is R1. When the satellite is revolving, is rotating in this orbit, it has gravitational potential energy, which is Gmm over R1. M is the mass of the planet, and small m is the mass of the satellite, and R1 is the radius. Its kinetic energy is equal to G capital M small m over 2R1. When the same orbit is shifted, is moved to the second orbit here, its gravitational potential energy will be different, minus Gmm over R2, and the kinetic energy is equal to G capital M small m over 2R2. Now, when the orbit is shifted by the satellite, suppose this satellite is going to the lower orbit.
तो जब ये आपका सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में जाएगा, इसकी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो इन ऑर्बिट शिफ्ट, delta gravitational potential energy will be minus G capital M small m over R2 minus G capital M small m over R1. So the orbit is changing. ये higher orbit से lower orbit में जा रहा है. So there is a decrease in the potential energy. So this is the shift. Now what's the common? Minus G capital M small m and 1 over R2 minus 1 over R1. This is the change in its gravitational potential energy. Now, what is the change in its kinetic energy? So definitely in the lower orbit, gravitational potential energy decreases. इसका मतलब है kinetic energy क्या करेगी? Increase. So the change in kinetic energy is equal to G capital M small m over 2 R2 minus G capital M small m over 2 R1. Now, common G capital M small m over 2 is equal to 1 over R2 minus 1 over R1. Now compare these two. This is change in gravitational potential energy. This hole is appearing here. GMM 1 by 2, 1 over R2 minus 1 over R1. So we can write, instead of this whole, change in gravitational potential energy and this 2 remaining divided by 2. So from the comparison of these two equations, we can write change of kinetic energy is equal to change in potential energy divided by 2. So half of the potential energy is converted into kinetic energy. लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि जो डेरिवेशन की थी कि no law of conservation of energy, total potential energy is converted into kinetic energy. So in numericals, we will use this. But in the theory, this is not possible. The paper में पूछेगा कि practically this is not possible. तो हम सिर्फ लिखेंगे this is because of half of the potential energy or the rest half of the gravitational potential energy is lost due to atmospheric friction. जब सैटेलाइट एक ऑर्बिट से नीचे दूसरे ऑर्बिट में आता है तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक नहीं बनती, आधी बनती है, आधी जाया हो जाती है. और जब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है तो लॉस ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में. और ये जो हीट होती है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है. टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वो इग्नाइट हो जाता है, इग्निशन उसका टाइम आ जाता है, मीन इट कैचेस फायर. सम टाइम आपने देखा होगा मीटराइट्स जब फॉल करते हैं तो उनकी टेल से आग निकल रही होती है, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस रिलेशन. तो जब वो नीचे आ रहे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज करती है, सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होती, आधी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, बाकी फ्रिक्शन को ओवरकम में करती है. ठीक है, लगलाती है बेटा. जब फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जब भी किसी चीज का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता है उसका इग्निशन पॉइंट आ जाता है, इट कैचेस फायर, इसलिए वह मीटराइट्स बन जाते हैं. तो गिरते हुए उनको आग लग जाती है. Okay. So next,
अब अगर हम देखें, हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट दे फॉल स्ट्रेट, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है, अर्थ ऐसे है बेटा, कर्वेचर है, जब भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो ये कभी स्ट्रेट नहीं गिरता, या इस साइड पे गिरेगा या इस साइड पे गिरेगा, कभी ऑब्जेक्ट सीधा नहीं गिरता। आप बैठे हैं, कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो आप गिराते हैं, आपको लगेगा कि ये सीधा गिर रहा है, लेकिन नहीं गिरता, बिकॉज हियर इज अ मून। अब इसको अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो डेफिनेटली मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये इसकी रिजल्टेंट ग्रेविटी होगी, तो ये नीचे सीधा नहीं गिरेगा, एंगल्ड गिरेगा। लेकिन जब मून इस साइड पे होगा तो ये आपके पास ग्रेविटी इस साइड पे होगी, तो फिर ये इधर गिरेगा। सो ड्यू टू द पुल ऑफ नियर by objects surrounding planets, ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कभी भी सीधा नहीं गिरते, हमेशा एंगल्ड गिरते हैं। तो जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ इस स्पीड से कैलकुलेट हो, जो आपने कर ली, तो हम इग्नोर कर रहे हैं मून की आपके पास पुल जो है और प्लैनेट की, इसलिए यहाँ जो स्पीड से जाके गिरेगा ये बड़ी होगी एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड स्पीड, क्योंकि कैलकुलेशन में हम सराउंडिंग ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कभी भी सीधा नहीं, तो हम भी कभी सीधा खड़े नहीं होते, हम भी टेढ़े खड़े होते हैं, लेकिन सारे ही टेढ़े खड़े होते हैं, इसलिए पैरेलल लगते हैं और सीधे लगते हैं। तो इसलिए याद रखें, जब मून की पोजीशन बदलती है तो हमारा भी एंगल ऑफ टिल्टनेस, हमारी भी इंक्लिनेशन बदल जाती है। तो अगर आपके पास मून इस साइड पे है तो ऑब्जेक्ट इधर गिरेंगे, मून इधर आ गया तो इस साइड पे गिरेगा। तो भारत मून के अलावा भी इफेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से, पुल की वजह से स्ट्रेट फॉर निकलता, एंगल फॉल करता है, और जो कैलकुलेटेड हमारी स्पीड होती है उस स्पीड से ज्यादा जाके वो हिट करता है एक्चुअली, क्योंकि उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, रिजल्टेंट ग्रेविटी भी ज्यादा हो गई, इसलिए स्पीड को ज्यादा गेन कर लेता है। ओके, सो geostationary satellite, it is located exactly above the equator Number 2, satellites are moving from west to east as Earth does. Number 3, time period of the satellite is exactly equal to the time period of the Earth. Number 4, satellites appear static to certain part of Earth and used in telecom.